Hello. As you know that I'm doing Polity IR Previous question from the Civil Services examinations. Today we are going to see the questions of year of 1999 and 2000 from the topic Constitution. Okay. So let's see these years from the Constitution. The Constitution of India recognizes only religious minorities, only linguistic minorities, religious and linguistic minorities, religious, linguistic and ethnic minorities. Okay. So answer will be C. Ethnic की कोई बात नहीं होती है. It's religious and linguistic. Okay. So Article 29, Article 30, culture and educational right. ठीक है. So the answer is C. Next, okay, correct पूछ रहा है. With respect to an amendment to the Constitution of India can be initiated by Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislature, president. Okay, so you can answer easily this question. So this is actually Lok Sabha and Rajya Sabha. Answer is D. ठीक है. तो कोई भी अमेंडमेंट वो लोक सभा में हो सकता इनिशिएट हो सकता है, राज्य सभा में हो सकता है. तो लोक सभा में होता है तो फिर राज्य सभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होगा, और अगर राज्यसभा में होता है तो लोकसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है. ठीक है. सो एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368. इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं रिक्वायर्ड है. बट जैसे मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है तो उस केस में उनका रिकमेंडेशन चाहिए होता है. बट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो द आंसर इज डी. स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ भी लेना देना नहीं है इससे, एंड प्रेसिडेंट का, बट उनका एसेंट बाद में चाहिए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट पूछ रहा है. विद रिस्पेक्ट टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट अमेंडमेंट्स to the elections law by the Representation of People Act 1996. देखिए ये 1999 में आया है, 1996 में कुछ हुआ होगा तो उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है. बट एनीवे विल सी दैट एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन shall entail disqualification for the contesting elections to parliament and state legislature for the 6th year from the date of conviction. Okay, there is an increase in security deposit which a candidate has to make to contest the election to the Lok Sabha. A candidate cannot now stand for the election from more than one parliamentary constituency. No election will now be countermanded on the death of the contesting candidate. ठीक है. तो इसमें पूछ रहा है कि ये कौन कौन सा उसमें हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था. ठीक है. तो इसमें देखिए थर्ड वाला इसमें रॉन्ग है. द कैंडिडेट कैन नॉट सो स्टैंड फॉर हिज इलेक्शन मोर देन, दिस इज रॉन्ग. ठीक है. वो दो में कर सकता है, बाकी तीनों सही है. ठीक है. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement about the money bill is not correct. देखिए यहाँ पे not correct पूछ रहा है. A money bill can be tabled in either house of parliament. The speaker of Lok Sabha is final authority to decide whether bill is money bill or not. The Rajya Sabha must return the bill passed by the Lok Sabha and send its consideration within 14 days. The president cannot return money bill to the Lok Sabha for reconsideration. ये काफी अच्छा क्वेश्चन. इसका फर्स्ट वन इज रॉन्ग. मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. नो, दिस इज रॉन्ग. मनी बिल जो होता है वो ओनली एंड ओनली राज्यसभा में, लोकसभा में टेबल होता है. ठीक है. और कहीं नहीं होता. राज्यसभा में उसको पास होने के बाद भेजा जाता है और विद इन 14 डेज राज्यसभा हैज टू रिटर्न. अगर वो नहीं रिटर्न करते हैं तो मान लिया जाता है कि रिटर्न हो गया है. ऐसा है. ठीक है. और ये ही इज द स्पीकर हु डिसाइड, yes, he will decide whether it is a money bill or not. This is also correct. ये बोल ही दिया मैंने. And the president cannot return the money bill
to the Lok Sabha for reconsideration. This is also correct. ठीक है, और आर्टिकल 110 में मनी बिल आता है, प्लीज रिमेंबर दैट. ठीक है, यूपीपीसीएस में सीधा सीधा पूछा था व्हाट इज मनी बिल का आर्टिकल क्या है, मनी बिल का आर्टिकल क्या है, 110. ठीक है, सो द आंसर इज ए. इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ओके, 72 and 73 will read that. Generation of the, okay, we'll read that. Generation of gainful employment for the unemployed and underemployed men and women in the rural area. The generation of enforcement for the able-bodied adults who are in need and deciduous work during the lean agriculture season. Okay, laying foundation for a strong and vibrant Panchayati Raj institution in the country. Yes. A guarantee of right to life, liberty and security of the person, equality before law and equal protection without discrimination. Okay, I think 72nd 73rd Constitutional Amendment Act हम लोग पढ़ते रहते हैं कई बार. So this is actually 6C. ठीक है, laying the foundation for the strong and vibrant Panchayati Raj. It is related to Panchayati Raj institution in the country. Okay, so 73rd Amendment Act added 11th schedule to the Constitution and Part 9th, which provides for the Panchayati Raj system. Please remember that it's related to Panchayati Raj system. ठीक है, you please comment कहाँ पे ये पहली बार इंडिया में किस स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट टाइम, पंचायती राज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग और लेट अनदर मेंबर स्पीक. दिस फेनोमेना इज नोन एज डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपेलेशन, यील्डिंग द फ्लोर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अगर स्पीकर एक को स्टॉप करके दूसरे को बोलने के लिए बोलते हैं. So this is actually called yielding the floor. Okay, this is called yielding the floor. Decorum means maintaining proper behavior. Interpellation means formal right of the parliament to submit formal question to the government. Crossing the floor means to vote against the party lines. Yielding the floor means means speaker giving parts of his or her speaking time to another speaker. While this practice is allowed to some legislative bodies, it is not allowed to deliberate assemblies unless specifically authorized in the rules. Okay, so it is nothing but it's yielding of floor. Please remember this. आ सकता है ये. Next, consider the following statement about the Attorney General of India. ठीक है, Attorney General of India के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें. He is appointed by the President of India. Okay, he must have the same qualification as required for the Judge of Supreme Court. Okay, he must be the member of either House of Parliament. He can be removed by impeachment by the Parliament. ये तो एकदम पक्का से गलत है. He must be the member of either House of Parliament. No, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है. तो अगर आप तीसरा गलत करेंगे तो ये बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे. ठीक है, अगर आपको ये वाला पता है, बाकी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है. इनको इम्पीचमेंट नहीं किया जाता, इनको कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं. सो द आंसर इज ए. ठीक है, ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इनके लिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है. ओके, सो आर्टिकल 76 impeachment procedure for the Attorney General is not provided. He shall hold office during the pleasure of President. ठीक है, he must not be member of either House of Parliament. ठीक है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वही हटा सकते हैं. ओके, और इनका इम्पीचमेंट नहीं होता, ऑब्वियसली बात है. एंड ही इज नॉट द मेंबर ऑफ either House of Parliament. And obviously the qualification for AG of India is nothing but he has to be as equivalent as his qualification as equivalent as the Judge of the Supreme Court.
Next, the primary function of finance commission in India is distribution of revenue between the center and states, prepare the annual budget, advise the president on financial matters, allocate funds to various ministries of union and state government. Okay, so I think you can answer this question very easily. It is the A. Okay, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से सेंट्रल स्टेट में करना, इट इज डन बाय द फाइनेंस कमीशन. ठीक है, सो वी रीड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन. देखिए, और ये रिकमेंडेशन देते हैं और ये टू द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली टू द गवर्नमेंट, बट वो बाइंडिंग नहीं है कि वो फॉलो करें, बट ऐसा कन्वेंशन है कि वो जो बोलते हैं उसको गवर्नमेंट फॉलो करती है. ठीक है, मेक अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट. फर्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन दैम अंडर दिस चैप्टर एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट of the respective sphere of such proceeds. Second, the principles which should govern the grants and aid of the revenues of the state out of the consolidated fund of India. ठीक है, ये चीज़ भी करती है. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूट तो करती जो टैक्सेस का होता है. थर्ड, एनी अदर मैटर्स रिफर्स टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस. ठीक है, पैसे से रिलेटेड जो भी अगर कुछ प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंस कमीशन को भेजना चाहिए, सो ही कैन डू दैट. फोर्थ, द कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन देम. ठीक है, तो ये वही जो हमारा टैक्सेस का कलेक्शन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करिए. गवर्नमेंट बाइंडिंग, मतलब गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि वो करे, बट वो जो बोलते हैं वो करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट करती है डिस्ट्रीब्यूशन में. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन. ठीक है.